Okay, beta. So in last session, condensation polymerization में we did the basic definition of condensation polymerization, ठीक है? और हमने उस definition में कहा कि the joining up, देखें key point याद रखिएगा, the main difference between the addition and condensation polymerization, जो main difference, अगर वो पूछता है कि what is the main difference, so there are two main differences. One difference for एडिशन पॉलीमराइजेशन कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन इज कंपलसरी, ठीक है। एक डिफरेंस तो ये है कि वहां अनसैचुरेटेड होना चाहिए। दूसरा डिफरेंस ये है कि इन इन अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन removal of water molecule is compulsory. As I said, it could be a removal of HCl as well, but in O level we used to say that the removal of water molecule is compulsory. सही है? So this is formed by the removal of water molecule. And then we move forward. You say the condensation polymers are present when we have OH reacting with carboxylic acid. यानी एक मोनोमर में आपके पास OH होना चाहिए, दूसरे मोनोमर में carboxylic acid. या you could have like carboxylic acid with NH2. If you have carboxylic acid and OH, you will have a ester linkage. ठीक है, अगर ये दोनों होंगे तो you will have a ester linkage. If you have carboxylic acid with NH2, you have amide linkage, जिसे बायो वाले पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं. Okay, clear? But it is not possible to have a polymer with OH and NH2. ये possible नहीं है. सही है, तो ये बात यहाँ पर लिखिए, OH with NH2 is not possible. Either you have OH with carboxylic acid, polyester. Either you have NH2 with carboxylic acid, which is called polyamide. ठीक है. In condensation polymers, either you have an ester linkage, which is this one. Either you could have an amide linkage, which is this one. So to identify the ester and amide linkage, if I take you towards this past paper, ठीक है, and if I ask you, can you identify कि भाई यहाँ पर कौन सा linkage present है? Can you write it on the chat? Which linkage is present, ester or amide? ठीक है उस्मान, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा बेटा. Is it ester or amide? Yes, this is an ester linkage. You can see. You can, if you see C double bond O के next अगर आपको ऑक्सीजन नजर आए तो it's a ester linkage, ठीक है, and this is ester. And if you see C double bond O के next अगर आपको नाइट्रोजन नजर आए तो this is amide. To identify the ester and amide linkage is very very simple, ठीक है. In a similar way, if we move forward, you can see this is a ester linkage as well. So this is a polyester, ठीक है. And if we move forward, this one, you can see this is a ester linkage as well. It is a polyester as well. Amide, forward, this one. You can see C double bond O के बराबर में आपको क्या नजर आया? It is a nitrogen. So it is amide linkage. So this is a polyamide. Polyamide. ठीक है ना? This is a polyamide. I hope कि अब आप you can easily identify ides up. So you can see whatever the like whatever the remaining part, ये जो साथ में लिखा हुआ है ना, ये कुछ भी हो इससे कंसर्न नहीं है, हमें लिंकेज चेक करना है. So you can see C double bond O के next you have oxygen, so it is an ester linkage. ठीक है, this is called polyester. In a similar way, okay, this one polyester, and in this one you cannot see any ester or amide linkage, so it is a addition polymer. अगर आपको amide या ester linkage नहीं नजर आ रहा तो it must be a it must be a addition polymer. In the next one you can see this is a amide linkage. Starch is not no more a part of our syllabus, तो अभी हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है. ये वाला लिंकेज अब हमें डिस्कस नहीं करना. In this one, yes, this is amide. In this one, you cannot see any ester amide, so this is a addition polymer. You cannot see any ester amide linkage. This is again a addition polymer. This is polyamide and this is polyester. देखें, polypropene की example हमने करी है ना addition polymerization में. In a similar way, we have done PVC in addition polymerization. So these are the example of addition. Protein and polyester amide linkage. Polyethene addition link additional. Sorry, addition
polymer, and these two are basically the condensation polymer. It might be possible, uh, okay, it might be possible that in exam they might ask you कि भाई which type of polymerizations is present in protein, तो आपको लिखेंगे condensation polymerization, पॉलीइथीन एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। So I think these are the very simple question now. Let's move forward and do this condensation polymerization in detail by taking the first example. The first example हम लेते हैं, as I said के the condensation polymer could be a synthetic polymer, the example is a nylon. It could be a addition, natural polymer, the example is basically protein, and both are the polyamide, ठीक है। तो let's take an examples of polyamides first, ठीक है। तो हम सबसे पहले example लेते हैं polyamides की, and the first example in a polyamide is basically nylon, ठीक है। नायलॉन के लिए याद रखिएगा दिस इज बेसिकली सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, ये मैन मेड है, दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज मैन मेड। आपको पता हम नायलॉन यूज करते हैं इन रोप्स, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स के अंदर, इन फिशिंग नेट्स, ठीक है। वी यूज इट इन टेक्सटाइल फॉर मेकिंग क्लोथ्स एज वेल, ठीक है। एंड to for your reminder, you must know that this is basically the amide linkage. As I said कि for amide linkage हमें कार्बो ऑक्सैलिक एसिड के साथ क्या चाहिए होता है, अमाइन चाहिए होता है, NH2 with a कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ये बात हमने यहाँ आपको सिखाई थी ना। You can see for amide linkage you need carboxylic acid and NH2. So specifically nylon is made by monomer which is consisting of a dicarboxylic acid and diamine. So the monomers of this monomer of the synthetic polymers, monomer क्या है हमारे पास, the monomer is dicarboxylic acid. So it could be any carboxylic acid with OC double bond OH on left side, ठीक है, बीच में कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, it could be anything, and C double bond OH on the line. This is called dicarboxylic acid, ठीक है। अच्छा अब देखें, it could be any carbon chain, ठीक है, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। टू मेक दिस एग्जाम्पल अ जर्नलाइज्ड एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, रेदर देन राइटिंग दिस मैं इसे एलिमिनेट कर रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट सिंपली ड्रॉइंग अ बॉक्स हेयर, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आपको ये बात याद रहे कि दिस बॉक्स मीन्स एनी कार्बन चेन, ठीक है बेटा। तो बॉक्स का मतलब है एनी कार्बन चेन, इट कुड बी एनी कार्बन चेन, सो दिस इज बेसिकली द जर्नलाइज्ड एग्जांपल। एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, you have carboxylic acid on double bond on both sides, ठीक है। एंड देन you have a amine NH, अगेन हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, रेदर देन राइटिंग डाउन द कार्बन चेन हम बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं, एंड देन you have NH2, ठीक है। Now to differentiate the chain of this carboxylic acid from amine, हम एक काम ये करते हैं कि we made this a shaded box. इस shaded box का मतलब भी ये है कि it could be any carbon chain, but this carbon chain could be और हो सकती है डिफरेंट फ्रॉम दिस कार्बन चेन, ठीक है। ये दोनों चेन एक जैसी भी हो सकती हैं, ये दोनों चेन डिफरेंट भी हो, हमारा कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। We more bother about the terminal carboxylic acid and amine group. So these are called basically diamines, ठीक है। So we need a dicarboxylic acid and diamine to make a nylon. अच्छा अब एक बात याद रखिएगा, for the formation of एमाइड लिंकेज हमेशा क्या होता है कि कार्बो ऑक्सैलिक एसिड से OH एलिमिनेट होता है और हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है फ्रॉम नाइट्रोजन, ठीक है।
So इसका मतलब this is basically the elimination of water takes place. That's how the elimination of water takes place. ठीक है? Clear? Now they join together to form a repeat unit of nylon. So यहाँ से भी OH चला जाएगा और यहां से H चला जाएगा. ठीक है? And you have this C double bond O, then you have a empty box. Carboxylic acid, then C double bond O, then you have NH, shaded box, then you have NH and void bond. यहाँ आप bracket लगा देंगे and place N here. So this is basically the repeat unit of nylon. ठीक है बेटा, this is a repeat unit of nylon and you can clearly see that in this repeat unit you have an amide linkage present. So this is basically an amide linkage. सही है. आई एम मूविंग बिट स्लोअर बेटा. मेक श्योर दैट आपको देखिए बेसिकली ये जो पॉलीमराइजेशन के इस पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर हैं, these structure looks difficult but if you know the basic concept कि आपको सिर्फ की पॉइंट क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव करना है और NH का NH2 का हाइड्रोजन रिमूव करना है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा एंड देन यू हैव टू राइट one water molecule or you have to write just water molecule here. Technically two water molecule होंगे but you can write simply H2O just to show that the water molecule getting removed. ठीक है? तो removal of H2O. सही बेटा, that's how you draw the repeat unit. If you have to show the section of a polymer, then you have to write this repeat unit 2 times. So I'm just going to write down the same repeat unit 1 time. Okay, this is 1 time. Again मैं right side से start करूंगा. Be very careful while you write down these के कोई error ना हो. ठीक है? और NH पे finish कर दूंगा. Okay, this is basically a small section for the polymer of nylon. ठीक है बेटा? And you can see amide linkages present are here. So this is basically a polyamide. So the first example of polyamide is basically nylon, in which you have an amide linkage, and I said कि amide linkage is always formed when you have a carboxylic acid reacting with amine. सही है? So here just quickly दो लाइनें लिख लेते हैं about the uses of nylon. ठीक है? The first use is the fishing rods. Sorry, fishing nets. ठीक है? These are the main uses of nylon. इसके अलावा भी multiple uses हैं for the nylon. So you can just simply write any of these. Fishing nets हो जाते हैं, rock climbing ropes हो जाएगी and so on. ठीक है? The next example of polyamide is basically a natural polymer. This example is also a part of our syllabus now. ठीक है? And that's basically called proteins. Protein is basically a natural polymer. We all know that the protein is synthesized within our body by some monomers, and the monomers of proteins are called amino acids. Okay? The monomers
amino acids. Okay, let's talk about amino acid first. हम फिर उसके as we know that protein is basically a polyamide और हमने कहा कि polyamide के लिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन ग्रुप चाहिए होता है और इसमें आपने एग्जांपल में देखा there is one molecule that contain a carboxylic acid group, the other molecule contain amine group. There is a little difference in amino acids. Amino acids are the molecule that contain both amine group NH2 and carboxylic acid. ठीक है? A molecule that have both COOH and NH2 group present. Amine group or carboxylic acid both are present. That's why they are called amino acids. ठीक है? So basically क्या होता है? You have this box. ठीक है? बल्कि हम box के जगह है, let's take an example of a carbon. So you could have a carbon. ठीक है? One hydrogen, one carboxylic acid group, one NH2 group present. एंड यहां पर आपके पास कोई भी कार्बन की डिफरेंट चेन हो सकती है सही है क्लियर इट कुड बी एनी डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन ओके बेटा सही है यहां पर जो हमने आर लिखा है आर का मतलब है इट कुड बी कार्बन चेन ठीक है क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ different R groups, there are different types of amino acids present. These different amino acids are used in the formation of different types of proteins that perform different body functions. ठीक है क्लियर इस बात को और थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं बिकॉज इन अ प्रीवियस सिलेबस हमारी आर ग्रुप वाली बात हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं थी सो मेक श्योर कि आपको ये बात क्लियर हो सो आई कैन गिव यू टू एग्जांपल्स ऑफ अमाइनो एसिड ठीक है यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ COOH है इट कुड बी CH3 it could be CH3 here ठीक है this is amino acid 1 or you could have an amino acid H2N CH CH2 CH3 और यहाँ COOH you can see both of these contain a different alkyl group or different R group present. So on the basis of these different types of R, it could be another carboxylic acid on this R group. So on the basis of these different type of R group, we have different type of amino acids. And these amino acids join together to make a polymer. So generally, we can represent these amino acids. इसको हम generally कैसे represent कर सकते हैं? We can simply write it in a box form.
हमने इस पूरे सेंटर पार्ट को बॉक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. वी डोंट सी डबल ओ एच हेयर एंड NH2 हेयर. इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह कर सकते हैं, अगेन इन अ बॉक्स फॉर्म, सी डबल ओ एच हेयर, और इसको हम शेड कर देते हैं. ठीक है बेटा, इस शेड का मतलब क्या है? डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है. एज आर मेन कंसर्न इज द अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें इसका लिंकेज शो करना है. तो हम जनरली अमाइनो एसिड्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दीज आर टू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. क्लियर? तो हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देते हैं. ठीक है, these are the two different types of amino acid. And by let's see the formation of the polymer. So हमने पहला amino acid लिखा with one box, and this is the empty box to make it differentiate from the other one. Then you have to write C double bond OH plus second amino acid. ठीक है, clear? Now again NH2 से H जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाएगा, and in a similar way here भी कार्बोक्सिलिक एसिड OH remove करेगा, water molecule get eliminated, and these two monomer join together to make a repeat unit. ठीक है, so the repeat unit of protein is basically this one, NH, and then you have an empty box, C double bond O, NH, then you have this box, then you have C double bond O. ठीक है, this is basically the repeat unit of protein. सही है. अब देखिए, this is a पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं. Now write down a small section of polymer for protein. So I'm just going to write down this repeat unit two times. ठीक है, NH, and then you have this box, then you have C double bond O, then you have NH, this box, and then you have C double bond O. This is one repeat unit. As it is copy किया. Again nitrogen onward, I'm just going to copy this one as it is. ठीक है, इसको यहाँ से दोबारा copy कर लेते हैं. C double bond O, NH, and then you have this box which is the shaded box. Then you have C double bond O and place them. This is basically a protein small section. ठीक है. सही. नाउ एट दिस स्टेज मैं आपको सिर्फ एक चीज जो है वो एम्फेसाइज करूंगा और एक चीज जो है वो सिखाऊंगा. मेक श्योर दैट यू नो अबाउट दिस. क्लियर? देखिए, unfortunately the protein and nylon exactly looks like they both have the amide linkage. देखिए दोनों में amide linkage है यहाँ भी, and if you look at the nylon you can see the amide linkage. If I give you a section of a polymer and if I ask you it is a protein or a nylon, ठीक है, if I ask you that is this polymer a protein or a nylon, that's what. Sometimes it become difficult for you to identify. ठीक है,
तो मेक श्योर कि एक की पॉइंट आप याद रखें। देखिए, अगर इन बॉक्स के दोनों तरफ आपको कार्बन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है, ठीक है, या बॉक्स के दोनों तरफ बोथ साइड यू सी नाइट्रोजन, if you see carbon on both side of this box और if you see nitrogen, दोनों होंगे, अगर दोनों तरफ कार्बन है तो दोनों तरफ नाइट्रोजन भी होगा, then this is nylon, ठीक है। but if you see carbon on one side of the box and nitrogen on the other side of the box, एक ही बॉक्स के एक तरफ कार्बन हो और दूसरी तरफ नाइट्रोजन हो, तो दिस इज प्रोटीन। इतना आसान है इसे पहचानना, ठीक है। इफ यू सी कार्बन ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉक्स, किसी भी बॉक्स के दोनों साइड चेक करेंगे, अगर दोनों साइड कार्बन या दोनों साइड नाइट्रोजन है तो इट इज बेसिकली a nylon. But if you see carbon on one side of the box and nitrogen, then it is a protein. ठीक है? Clear? That's how you identify the nitro. So you can see in our protein structure, we have nitrogen on one side and we have carbon on the other side. So this is basically a protein. But in this one, which is nylon, you can see both side nitrogen and both side of the box you have carbon. So this is basically a nylon. ठीक है, आइडेंटिफाई हो जाएगा। बताइए, is this point clear बेटा? Normally student making mistake and a confusion how we can identify both are amide, that it is a nylon or a protein. So make sure that you know that if the boxes की basis पे आपको identify करना होगा। Is it clear? ओके बेटा, सो होपफुली प्रोटीन एंड नायलॉन का डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है, और इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन की बात नहीं है। दीज आर द टू मेन एग्जांपल्स दैट वी नॉर्मली गिव फॉर पॉलीएमाइड्स, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू टू एग्जांपल्स ऑफ पॉलीएस्टर्स। Make sure that you know that ester group have C double bond OO present, ठीक है, this is basically polyester, clear? uh, polyester the monomer must contain carboxylic acid group, ठीक है, so it must contain carboxylic acid group and the OH group must be present. तो polyester बनेगा, we know that के carboxylic acid से OH polyester formation के लिए the first example I'm taking is an example that's basically called terylene, ठीक है। terylene is basically a synthetic polymer. इसकी ज्यादा डिटेल अब रिक्वायर्ड नहीं है, बट वी कैन यूज इट एज अ गुड एग्जांपल टू मेक अ पॉलीएस्टर, और पास पेपर में बहुत जगह नजर आएगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसे कर लीजिए, ठीक है। सो वी हैव HO C double bond O carboxylic acid with some carbon chain, सही है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड डाई, डाई मींस टू carboxylic acid. It react with alcohol or monomer that have alcohol with a different carbon chain on both sides. These are called diol. Ol is the OH group, है ना? Clear? Again similar, carboxylic acid से OH remove होगा, यहाँ से alcohol से H remove होगा, यानी the elimination of water molecule take place by this carboxylic acid ester formation में elimination of water molecule. अच्छा, यहाँ भी आप वाटर मॉलिक्यूल लिख दीजिएगा, ठीक है, साथ में H2O, क्लियर? सही। सो these are basically the two monomer dicarboxylic acid and diol. आगे चलते हैं and let's talk about
the repeat unit of this, so C double bond O से start होगा, and then you have an empty box. Then you have C double bond O O. Then you have this shaded box O. ठीक है? This is one repeat unit. Yeah, N लगा दीजिए. So this is basically the repeat unit of Charlie. In a similar way, if I write this repeat unit two times, so C double bond O one time, C double bond O, this is basically the section of polymer for Charlie. ठीक है बेटा, and you can clearly see in a pterylene you have this linkage present. This is basically the ester linkage. ठीक है ना? कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ के नेक्स्ट आपको क्या नजर आ रहा है? ऑक्सीजन. सो दिस इज एन एस्टर linkage. टेरेलिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिक. ठीक है, इसके यूजेस और ये सारी चीजें डिटेल में हमें रिक्वायर्ड. अच्छा, होता ये कि टेरेलिन बिकॉज ऑफ दीज कार्बन चेन्स, ये जो यहाँ पर कार्बन की चेन है ना, इन कार्बन चेन्स की वजह से टेरेलिन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है. फ्लेक्सिबल का मतलब सॉफ्ट होता है, सॉर्ट ऑफ अ रबर टाइप प्लास्टिक होती है. अच्छा, टू मेक इट मोर रिजिड, हम ये करते हैं कि हम टेरेलिन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीमर, और उस स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीमर को हम बेसिकली पीईटी कहते हैं. यानी पेट बॉटल्स जो हमारे पास आती हैं, दैट्स बेसिकली अनदर एग्जांपल of this. Okay. So the next example of this polyester is basically PET. And we all know that it is a polyester. दूसरी बात, this is a sort of used in um, water bottles. ठीक है ना? या ना पेट बॉटल्स, वाटर बॉटल या सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स के तौर पे हम इन्हें यूज करते हैं. क्लियर? द मोनोमर ऑफ पीईटी, ये पॉलीइथाइलिन टेट्रा पिथिलेट होता है, लेकिन हाँ, इसके लिए जो है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है कि हम इसको अच्छे तरीके से इसकी डिटेल भी समझे. ठीक है? क्लियर? सही. द ओनली डिफरेंस इन द मोनोमर ऑफ पेट is that you have a diol with OH here and with OH here. ठीक है? इस डायोल, इस बॉक्स की जगह पे दो टू कार्बन भी आ सकते हैं. ठीक है? और इट कुड बी HO CH2OH. ठीक है? मोर प्रिसाइजली आप इसको इस तरह से समझ लेंगे, आपको आसान रहेगा. ठीक है? कंबाइनिंग विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है? बट दिस carboxylic acid is not like a normal carboxylic acid. This is something like this. ठीक है? अब इसको समझना आपके लिए मुश्किल है, तो आप बिल्कुल इसी तरह से समझ लीजिए कि इट्स सेम एज टेरेलिन, बस यहाँ पर आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप होता है, इसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं. ठीक है? तो आपके पास जो पेट का मोनोमर बनेगा बेटा, वो कुछ इस तरह से बनेगा. यू हैव ऑक्सीजन, इससे OH जाएगा, इससे H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा. ठीक है?
तो यहाँ से भी ओ एच चला गया, यहाँ से एच चला गया, तो इट इज basically a box, or it could be two carbons, O. Then you have C double bond O. Then you have this benzene ring. Then you have C double bond O. And this is basically plus the removal of H2O. क्लियर? तो पेट को आप बिल्कुल उस तरह से अंडरस्टैंड करें कि अगर मैं यहाँ बेंजीन रिंग की जगह एक शेडेड बॉक्स बना दूं तो टेरालीन ही बन गया। तो इट्स एग्जैक्टली द सेम एज टेरालीन, बस बॉक्स की जगह पर आपको इस तरह का रिंग बना हुआ नजर आ जाएगा। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन पेट एंड बेंजीन एंड टेरालीन। टेरालीन में यहाँ पर कार्बन की चेन होती है, CH2 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 चल रहा होता है। उसकी जगह उन्होंने क्या किया, उसकी जगह पर एक बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड, ये इस कंपाउंड की डिटेल आप ए लेवल्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हमें बस सिर्फ इतना समझना है कि दिस इज अ बेंजीन रिंग विच इज प्रेजेंट। इसको आप इस तरह ड्रॉ करें जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, या इसको आप इस तरह ड्रॉ करें, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके इसी तरह ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सो इफ आई ड्रॉ दिस HO with alternate pi bond, sorry, ठीक है? क्लियर? तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब इसको आप दो बार लिख लेंगे। हाँ, हेक्सागोन नहीं बन रहा। आप इसकी जगह पर यू कैन ड्रॉ द बॉक्स इंस्टेड ऑफ दिस एज वेल। ठीक है, दिस इज बेसिकली द सेक्शन ऑफ अ पॉलीमर ऑफ PET। जो प्लास्टिक होती है, इट इज यूज इन अ पेट बॉटल्स। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली क्लियर। अच्छा, बेनिफिट पेट बॉटल्स के क्या है? पहला बेनिफिट ये है कि इट इज सेफ टू यूज एज अ यूज फॉर एडिबल गुड्स। यानी आप इसमें खाना वगैरह पैक कर सकते हैं। प्लास्टिक आपको पता है ना कि नॉर्मली इट इज इट कैन easily be recycled, it is reusable। ठीक है ना, आप इसे बार बार इस्तेमाल कर देंगे। वी नो दैट वी हैव अ ड्रिंकिंग बॉटल और हम उसे बार बार जो है वो रिफिल करके यूज करते हैं। तो दैट्स बेसिकली टेरेलिन इज अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिक। बेटा, टेरेलिन भी प्लास्टिक है, लेकिन टेरेलिन फूड पर्पसेस के लिए कम इस्तेमाल होता है। तो मेनली हम जो है वो पॉलिएस्टर में टेरेलिन के बजाय वी आर यूजिंग अ पेट बॉटल्स। आपने पेट बॉटल्स के नाम सुना होगा। सो फर्दर आप इस पेट बॉटल्स के बारे में, आई थिंक इट्स बेटर इफ यू जस्ट सर्च अ बिट ऑफ पेट बॉटल्स, देयर बेनिफिट्स, हाउ वी कैन यूज इट, तो यू विल फाइंड अ कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर ऑफ पेट, लेकिन दिस इज द मोस्ट फॉर्म ऑफ I think it's better if you just know these minimum। इनमें इस बॉक्स की जगह पर you have a present है। ठीक है ना, जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर आपके पास ये डाई कोई एसिड है। That's the only difference। ठीक है, clear? So that's the last thing that we have to do in a polymerization। We done with this one। So let's see some question। ठीक है, okay जी, question number 1।
इसमें देखिए याद रखिएगा कि स्टार्च इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एनीमोर, सो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हम एलिमिनेट स्किप करेंगे। बर्निंग पॉलीमर्स कैन कॉज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन व्हिच पॉलीमर ऑन बर्निंग could प्रोड्यूस अ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनमें से which monomer contain nitrogen, so no, there are two polymers that are proteins and nylon that contain nitrogen। उसके अलावा किसी में टेरेलिन में भी नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। स्टार्च हमने किया नहीं है, पॉलीथीन में कार्बन एंड हाइड्रोजन है। सो ए इज द आंसर बिकॉज इट हैज। तो नाइट्रोजन is produced by all burning of all those polymers that have amide linkage। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्निंग पे नाइलॉन और कौन प्रोड्यूस कर सकता है? प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, नाइलॉन एंड प्रोटीन्स आर द टू पॉलीमर दैट कैन प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ओके, द रिपीट यूनिट इज ऑफ द पॉलीमर इज शोन बिलो। सही है जी। विच रॉ करेक्टली डिफाइन। अच्छा, अब देखें इसका मोनोमर क्या होगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, एंड देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 and 2। So you have to search for a monomer that contain 4 carbon with a double bond at this position. So yes, the first one, how many carbon? 1, 2, 3, 4 carbon, double bond on this position. 1, 2, 3, 4, double bond in this position. I think this one is wrong. Double bond at wrong position. Double bond at a wrong. So either A or a B is the right answer. है ना? अगर मैच करेंगे तो ए और बी। दिस इज करेक्ट। 4 कार्बन डबल बॉन्ड एग्जैक्टली एट द राइट पोजिशन। Then you have 4 carbons, double bond right position, and this polymer must be made by the addition polymerization because you cannot see any amide or ester linkage and it's an alkene। Alkene हमेशा addition polymerization करते हैं। ठीक है, clear? Now this one, the diagram show the partial structure of a polymer। देखते ही मुझे पता चल गया कि this polymer is basically a polyamide, है ना? Because I can see a amide linkage in this one, so this is a polyamide। In a similar way, this is a repeated question, so I'm not going to do it again। This one, the diagram structure of a monomer। Okay, अब आपको देखें हमने तरीका क्या सिखाया था बेटा इससे पॉलीमर बनाने का। दिस इज द फर्स्ट कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड, दिस इज द सेकंड कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड। तो यहां से लाइन जा रही होगी। द फर्स्ट कार्बन हैव 1 फ्लोरीन and 1 CH3। The second carbon has 1 hydrogen and 1 chlorine। अब इसमें से मैच कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें द फर्स्ट कार्बन हैव 1 फ्लोरीन एंड 1 हाइड्रोजन। दिस इज करेक्ट, बिल्कुल। दिस इज नॉट इनकरेक्ट क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर क्या होना चाहिए? फ्लोरीन के ऊपर होना चाहिए CH3, है ना? फ्लोरीन वाले कार्बन पे एक तरफ यू हैव फ्लोरीन व्हिच इज यू कैन क्लियरली सी हियर, ऑन द अदर साइड यू हैव CH3। so this is wrong। क्लोरीन वाले का कार्बन पे एक तरफ क्लोरीन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, इसने दूसरी तरफ क्या लगा दिया? CH3। दिस इज रॉन्ग। क्लोरीन के ऊपर इसने फ्लोरीन लगा दिया। दिस इज रॉन्ग। कैन यू सी? मैं जस्ट कंसिडर कर रहा हूं, आई एम जस्ट कंसिडरिंग दीज टू कार्बन्स जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ठीक है, मैं सिर्फ इनको एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ फ्लोरीन और एक तरफ CH3 होना चाहिए। सो यू कैन सी हाइड्रोजन के साथ यू हैव क्लोरीन, फ्लोरीन के साथ यू हैव CH3, हाइड्रोजन के साथ यू हैव क्लोरीन, फ्लोरीन के साथ यू हैव द होल CH3 प्रेजेंट। सो D इज बेसिकली द राइट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है बेटा, अभी तो बात समझ आ रही है। मेक श्योर दैट यू रिवाइज पॉलीमराइजेशन, अभी के अभी रिवाइज करना है। ठीक है, पर यू रिवाइज इट तो आपको बात समझ में आ जाएगी। विच स्टेटमेंट अबाउट polymers is correct? Nylon and terylene are produced by the addition polymerization। No, these are the example of a condensation polymerization। Nylon and terylene contain amide linkage। No, terylene have a ester linkage। terylene और PET एक जैसे है ना, तो दोनों में एस्टर लिंकेज होता है, नाइलॉन में अमाइड। सिंपल शुगर आर प्रोड्यूस, ये तो हमने किया नहीं है। स्टार्ट, सो इसका मतलब वी कैन नॉट डू दिस वन because these are not a part of our syllabus anymore। so basically हमारे पास जो है वो we know that these are the wrong answers। which type of reaction could be used in the polymerization of ethene? addition reaction, है ना? कंडेंसेशन तो पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर में यूज होता है। ओके,
protein made up of human body, which is statement about insulin are correct. It is condensation polymer. Yes, protein है, proteins are condensation polymer. देखिए इंसुलिन के बारे में उसने बता दिया कि इंसुलिन is a protein. Now you have to answer this for protein basically. It is a synthetic polymer. No. When hydrolysis, protein produce only one monomer. 3 only produce one monomer. No. देखो हाइड्रोलिसिस इज बेसिकली हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया, अब हमारे पार्ट नहीं है हाइड्रोलिसिस, पहले था हमारे सिलेबस का पार्ट। हाइड्रोलिसिस में बेसिकली रिवर्स ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमर वापस से मोनोमर में चला जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर बैक इनटू मोनोमर्स। ठीक है, तो अगर आपके पास इफ यू हैव प्रोटीन, प्रोटीन डिफरेंट मोनोमर्स से बनता है ना, तो अगर प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होगी तो यू will get a different type of monomers. ठीक है, तो इसका मतलब it contain amide linkage, yes, 1 and a 4. C is the right answer. Amide भी है, condensation polymer है। अब क्वेश्चन आएगा तो they're not going to ask you about the hydrolysis. ठीक है, so just keeping it till here, make sure beta that you revise polymerization अच्छे तरीके से। I'll just share the recording and a note for polymerization. Make sure that you revise it. I might okay, I'll let you know about the timing for the next class.